Good evening once again to everybody, and uh, I wish everybody a very happy Republic Day. Greetings from City of Golden Temple to all of you. I deliberately kept this webinar today just because it's going to be an off day for everybody, and since it's not a weekend, everybody will be having time. Now, please, as a matter of courtesy towards the fellow members, I will request everybody, please do not unmute yourself. If you think that you are that good in talking, please unmute yourself and start presenting. Some people are very fond of showing their videos. Mr. Prabhakar, I'm switching off your cameras and you're still switching on again and again. So now Mr. Sandeep Mahathre, I think so. There has to be some kind of basic courtesy which is remaining, should be there. No? So please be a little courteous towards your fellow members. And today is a very different kind of a webinar which we are going to discuss. It is not for some short term. This is kind of a long term. A stock we will try to pick up at a lower price, and we'll try to take it how strong this is stock on the fundamental aspects. So we are only going to talk on the fundamental aspect, no entry and exit. And we will discuss these things over the period of time. Next 1 hour, we will finish it. Now, what I intend to cover in the stock is, the first is the disclaimer. What should be the fundamental criteria to pick up a stock and how to choose a stock? You can omit this word, a penny stock. It will be just like a stock which is priced under 100 rupees. So penny stock is normally defined under 10 rupees, but we'll try to find out if we can find anything which is under 10 rupees for us. I will not cover all the criteria to pick up a stock, but show some criteria on the financial aspects. Now, before I start, I will now like to take you on to the screener.in. So we create the first screen is we want current price less than 20 rupees. And let's see how many stocks we get. Now, this is the first step. We get 1,184 stocks. This I just punched one thing is, I punched stocks under 20 rupees. So we will be doing on from this part. From now, we'll start our journey. I again request everybody kindly, as a matter of courtesy and mannerism, you have been requested multiple times, do not switch on your cameras and please don't try to unmute yourself. Please don't try to show how good IQ you are having by defying all these things. So it's again an humble request. Following this, I will be removing the members. I'm very sorry. So the first member goes out is Mr. Chandrasekhar. I'm not reporting, but anybody who unmutes, I will be removing him. So anybody who wants to exit can use this very easily. Now, this is the first criteria I have put in, that the stock is under 20 rupees. And we get somewhere around 1,200 results out of it. So standard disclaimer, this is a free education platform. We do not offer any kind of paid courses. At least I don't offer. I don't intend to change anyone's investment or trading styles. All presentation under this forum are for education purpose and to make you aware what all this should be seen when you are taking a position in a stock on a long-term investment basis. We are not SEBI registered, at least I am not. I'm a doctor by profession. I do not guarantee any results in any form. I'm only sharing my experience with you. Please understand the concept. You are free to take a lot of paper testing, back testing. You are free to disagree with whatever I'm telling you. Please feel free to consult your financial advisor before taking the trade. As such, we have very good financial advisors in the group who have been helping the fellow traders into it. You can seek their advice also. If anybody you have and you think is good enough, you should take his advice. Now, the first criteria, what we are going to use is the debt to the equity ratio. This we had discussed in the previous webinar also.
Now, this is defined as total liabilities divided by the shareholders' equity. So total number of the shares, which is the total liabilities. So you divide it and you get it. Any figure which is between 1 to 1.5 is considered a good ratio. So we will be now skipping and adding onto our screener.in the next criteria on below it. And debt to equity ratio, let's keep it 1. I am still saying onto this part is, in one of the webinars which somebody said that they will teach you how to make a screener.in, how to use a screener and make it. I'm giving you, and they were charging somewhere around 6,000 or 7,000. I'm telling you it's free of cost. Now you see it at 1,200 reduced to 709 just by putting one criteria. So let's go down and see. We will make the criteria even more and more stringent as we go forward in our presentation. So anything between 1 to 1.5 is considered a good, fundamentally for it. It's a good ratio, which is considered good for a fundamentally strong stock. Now, next is price to book value. Price to book value is the ratio of the market value of the company share over its book value of the equity. So it is just what is the book value of the stock versus the equity value which is there. We are not going to go into any details of it. I'm just trying to, you should just remember the figure is. Traditionally, any value under 1 is considered good. This is all information is given on the Google. I have just picked up and doing it. And it indicates potentially undervalued stock. However, the value investors consider PB value under 3 as a good value. So we will just go by this figure. So we now add the second criteria. Price to book value less than 1. We started with 1184. With the second criteria, we reduced to 709. These are all stocks which are priced under 20 rupees. I'm not increasing the price. I've just kept the price. The whole criteria remains the same. Now, once I run it, the results again narrow down to half. It's 376. It's not less, it's too high. That is 376 companies who have their value under 20 rupees and satisfy these 3 criteria. So now we go to the next part of it. So this is the price value. I'm taking the most stringent, the lower half, not the upper half. Now is year-over-year growth. That the company should be growing every year. It should not be a stagnant. See, it was having 100 CR sales. Next year, it should not be 100 CR. It should be more than that. So what we call it YOY growth, what it is. This is a frequently used financial comparison for comparing 2 or more measurable events on an annualized basis. Don't try, if you don't understand, you just understand that there has to be a growth which we have to do it. For example, in financial report, you may read that a particular business reported its revenue increase for the 3rd quarter on an year-over-year basis for the last 3 years. So that the quarter sales on the 3rd quarter increased. Now what it is actually, I don't understand myself also. So I just remember the figures. A general benchmark for the companies should have an average between 15 to 45% or year-over-year growth. Means it should be at least 15 to 45%. So what we'll do is 15 plus 45 makes 60 divided by 2. So we will keep the criteria as 30. So we again go back because this will make
very hard for most of the companies to fulfill. Quarterly profit growth. I will not say profit growth greater than 30. Sorry, 30. Let's run and see if anybody comes into it. Wow, we still had 127 companies coming into it. And these are all priced under 20 rupees. So I have put up another thing. We are only trying to pick up the companies which are showing growth potential to us, which have a very low depth. They have a very good price to book value of under 1, and they are priced under 20 rupees. Now let's go back and see. We will try to decrease all of these criteria. Next is operative profit margin. Obviously, when we invest on the stock market, we only want profit. We don't want loss. So what is operating profit margin, or what OPM is called? Is the ratio measures the operational efficiency of a company and its pricing strategy. Actually, you should only understand that there has to be a profit which is made. So OPM should be, for a normal industry, should be somewhere between 10 to 12%. So it is considered 12% to be a good, 20% is excellent for most of the companies. Now we'll come on to and put this criteria. I'm putting everything one by one so that you should know how the things become stringent for the company. OPM greater than, it has to be equal to 12. Let's see and see. There is a problem. Greater than 10. We have narrowed it down to 28 companies now. So if the companies which more than 10% operating profit margin have now come onto this part. You can see it. We started with 1184 companies. We came down to 709, 376, 127, and now we are only 28 companies. Okay. There are a lot of questions which are keep on coming. Now, next is return on the capital employed. Now, this is a financial ratio which actually assesses the company's profitability and capital efficiency. So, to putting in another word is, it should be at least twice the current interest rate. Highest interest rate is somewhere around 7%. So we make it twice of it, it should be 14%. So ROC of any company which is double the interest rate, that takes care of your inflation also. So that is how we are going to take it. So an ROC as a golden rule of thumb is 15% or more is considered a decent quality business. So we will add now this condition to the screener. ROCE, return on the capital employed, greater than 50. Now let's see how many companies are left. There are nothing. So we have to decrease it to 10. No, nothing is coming. Return on capital employed is 10. Nothing is coming. So we decrease it to 7. Let's see what it comes. Only one company is coming. PVV Infra. I don't want this. So I increase the price here to 50 rupees and then try to run it again at 10. Now I get a lot of companies. They are closely placed. Some are placed to 20, some are less than 50 rupees. So we get so many companies on it. I just increase it to 15 just to make it a little more stringent. I'm left with 3 companies.
25.05 SP Capital Finance, Century Management and International Construction, which fall into this criteria. Now let's go and see if we have anything more to add on to this. CAGR won't come as the part of the screener because it's not there. Is a compounded annual growth is the growth rate of an investment over a specified period of time longer than 1 year. So this is how it's commonly a lot of people are talking on it. A good CAGR for a company is around 10 to 20%. It's approximately, you can always say it's almost double the interest rate which are available. Most of them say interest plus the inflation is the actual money you should be getting for making your money not depreciate with time. So anything between 8 to 12% is considered a good CAGR. So what I did was I made little more stringent onto this whole criteria. I had put the screener as price less more than 10 but less than 100, price to book value 1, debt to equity I had decreased from 1 to 0.5. Promoter holding we had discussed in the previous webinar. If anything 50 and above is considered very good. Year over year, quarterly sales growth should be greater than 1. Pledge percentage should be 0. And the operating profit margin should be more than 50. Trust me, these are not very easy criteria for any company to fill. So what we are going to do is, first we will take a screenshot of whatever we have already seen is. Please remember these two companies which have come on these criteria. So I increase the price to 100 rupees so that we get little more companies. So we had some more companies joining the group noise. So I decrease the debt to equity ratio to 0.5 and now run it. We still have 6 companies coming into it. Price to book value, we almost keep it same, and we try to increase the operating profit margin to 50. We didn't get any result. Now we pick up all the criteria which I have posted here, and I will going to copy and paste it there like this only. Agreed? And now I run this query. How many stocks I got? I got 17 stocks. Now I start increasing my criteria. I said the debt should be really very low. Now run it. I still get 13 odd stocks. Now I do it. I pledge percentage. I decrease book value, promoter holding year on year growth. And anything we are missing here on this? Anything? Sir, 1% year on year is not very low. It's we'll just increase it. We'll just increase it. There has to be some wrong. You should take market capitalization. No, we make it 10. So you still get growth. I think profit growth will be relevant, right? Yeah, you make it 15. Try to increase it. You start increasing it. Now, I say it should be 25. I only do it, keep on doing it. I want to make, okay, no, this is, the space was not there. I still have so many companies. So I increase again to 30%. I still have 4 or 5 companies coming into the play. I again increase it to 40, I say. I'm not decreasing it. I'm actually increasing the criteria. I still have 4 companies coming. I said, no, I don't want it. I want 50% increment into it. I still have 3 companies coming into it. I say, I don't want this, all this thing. I will say debt should be equal to 0. And I still have 2 companies coming into it. Now, sir, isn't it finding out a stock which almost put it into all the criteria we have tried to put it? I have a question here. Yes, sir, please go. Companies like Adani and all, or they are very fast, but the debts are very high. I think they are taking a lot of funding to grow their business. How to identify people who have a very good business plan? They are taking debt for the market, but they have a plan to invest that and get returns. Because these are companies which are doing very well also today. They are taking debt, repaying the debt, and they are also growing their business.
Sir, the first principle of the businesses, which I learned from a very seasoned politician was, and I said him कि आपने सर पंजाब पुराना कर्जा ही कर दिया. कहता डॉक्टर साहब आपने अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए कितना लोन लिया था? कहता businesses तो चलते ही लोन पे. So I am trying to play safe, sir. I cannot say anybody that you invest in any company which is too much under loan. Now let's presume that you are giving me an example of Adani. Now I give No, you no, another. I give another example, sir. Another example. Please hear me out. Yeah. Arcom was one of a very favorite. Arcom and R Power was one of the favorite stocks in 2008 and 2009, and I can vouch on the statement as I can say is half of the people who are sitting in the forum have burned their hands in these two stocks. And this includes me. This includes me. So just try to understand why I have kept such a stringent criteria. So will you put 50% or more money in a company if you are not sure? Yeah. No, agree, Bill. I agree. Agree? You have a growth of more than 50%. Then your pledge percentage is 0. The company is self-sustaining its growth. Operative profit margin is more than 50. So if it's spending 1 rupee to produce a thing, it is selling it at 2 rupees. Almost it's selling at 1.5 rupees. So it's 50%. 1.5. Yeah. 1.5. Yeah. Price and the book value same. We are getting it at a cheap price. Now let's say we normally hear, अगर आपने 2006 में 10,000 रुपए बजाज फाइनेंस में लगाए होते 6 रुपए पे, आज वो इतने करोड़ बने थे. So we are trying to identify these kind of stocks, which today 10,000 in 2006 is somewhere around about 40-50,000 this time is. That is what the money has depreciated. So if we have 1,000 shares of such kind of companies which are going to do well, which are we know is coming, what when we are investing for a long term, we are only investing in fundamentals. We are not investing into technicals. Technicals is only for trading. Fundamental is for long term. Most of these companies may remain in market or may not remain, but at the time, out of the given lot, this is how we are going to identify. This is how we are going to identify. Now we make the criteria very stringent. We started with somewhere around 1,200 odd companies. And even after making so stringent, we have only narrowed it down to 2. That is how you need to create the screener first for yourself. You keep on increasing the criteria. Pick up the lowest possible value. And that is how you are actually going to get money out of it. So this was the whole criteria of telling this webinar was, it is not how you create it. I had seen in one of the webinars, I don't remember by whom it was. They said, we will teach you to make a screener.in to find a fundamentally strong stocks. And for that, there were 2 months or 3 months of training and they were asking 6,000 odd rupees. I was quite surprised that something which is freely available and can be taught, why to pay money to it? You can read onto the net. I have picked up everything, if and buts of this. What is a Roche? What is a CAGR? What is an OPM? I've just tried to increase the criteria. Google says 1 to 1.5. Now, if I increase, now let's say debt to equity less than 1.5, we may have an increase in the number of the stocks we are going to run. Immediately it increased. I say promoter holding of just 30% or more should be there. It should increase the number of the stocks. What it's going to do is, can I invest into all these stocks? I cannot do it. So I need to put a very stringent criteria that it should be, I should get one of the best possible stock for me in which I can put in my money. Now see, I made debt to equity ratio 0.1 rather than 0. I had one more company coming in. Now Sir, may I ask you one question, sir? Sir, just let me finish.
After you see it, it's not that it has come into your criteria and you should immediately go and buy it. Go and read onto this part also. Now, what is the ROAS of this company? 27.9. Return on capital, 28.2. Face value, 10. What was it? High, 75.6, 7.9. Now, previous year it was down. Profit after taxation there. Promoter holding is here. Now, go and read about it. Compare it with its peers. You have a graph out here. You must see it. The only negative points they said it is a low return on equity for last 3 years. But we are looking at a long-term perspective with such kind of stocks. Then go and read onto these things, the balance sheet which is given here. It is hard work done by somebody else, which we are going to utilize it. Now you start seeing the profit after taxation here. We had 2 negative years, then we had this, then start seeing it gradually increasing. This month it was low, but this month it was good. Then keep on reading it. Then only, sir, you will understand. Once you start reading it, slowly, you will start understanding what is happening in this company. And when you start going into the details, then you will understand how this things are doing it. Yes, sir, please go ahead, sir. Sir, actually market capitalization is also important, no, sir? I agree. Now let's put, as per the sir's request, market capitalization कितना sir? 100 CR? कोई नहीं आएगा. I suppose, because that should be safer. Let's see it, sir. Run this query. Nothing will come, sir. In this stringent criteria, nothing will happen. So I have to increase this to 1. Then shayad 1. No, I have to take this part also off. The price has to go off. Now you had 19 results. Now I decrease it back to 0.2. प्राइस को 50 के ऊपर कर दीजिए, शायद अच्छे स्टॉक्स आ जाएंगे. सर मैं आपको प्राइस खुला छोड़ दिया ना आपका. अच्छा. अब मैं आपको और इसको स्ट्रिंजेंट, मैं सर स्ट्रिंजेंट कर ही जाता हूँ. आपके सामने बैठे कर रहा हूँ. आप लोग भी बनाना सीख लेना. करंट प्राइस लेस देन 50, ग्रेटर देन 50 कर दो सर. वो सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे. We had no, so we make it 200. हम इसको बढ़ाते जाते हैं ना. हाँ सर 16,000 का स्टॉक थोड़ी खरीदोगे आप. हाँ करेक्ट. तो आपके पास ये 3 आ गए. ये आपके पास आ गए. आप ध्यान से देखें, ज्यादातर स्टॉक्स जो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम द फाइनेंशियल वर्ल्ड. आप ध्यान से इसको नोटिस करना. सबसे स्ट्रॉन्ग जो आ रहे हैं ना स्टॉक्स, वो सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड से आ रहे हैं. अब इसको बहुत, मैं इसको बड़े ध्यान से देखता हूँ. बजाज फाइनेंस, कंटेम्पररीज, शार्दुल सिक्योरिटीज, बजाज फाइनेंस. आप इसको ध्यान से देखना. आपके हाथ में हमेशा फाइनेंशियल वर्ल्ड के स्टॉक्स आ रहे हैं. है ना समथिंग सरप्राइजिंग. सर कंज्यूमर इकोनॉमी है तो ये स्टॉक्स तो सर अच्छा कर ही रहे हैं लेंडिंग में. अब आपको एक तरीका, चलो आज सबको एक बोनस चीज कराऊं. करना है कि इस पे ऊपर कोई क्वेश्चन, फिर एक बोनस चीज कराता हूँ. उस दिन भी सर इंडो एशिया फाइनेंस ही आया. कोई क्वेश्चन है सर तो बताएं, फिर नहीं तो मैं आगे एक ना आपको आज वो सारे को ना एक चीज कराता हूँ. बड़ा मजेदार है, मैंने कल परसों खुद की. सर No questions on this? जी स्कोर लेते क्या? जी स्कोर वी डोंट टेक दैट. नहीं जी स्कोर मैं लेता हूँ. अब तो चलो मैं बताता हूँ आपको. जी स्कोर, जी फैक्टर आता है यहाँ पे. अब जी फैक्टर शुड बी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 9 वैल्यू. यहाँ देखो क्या बोलते हो, 10 है. हमने जी स्कोर लास्ट टाइम किया था, तो उसमें जी स्कोर के लिए हम अंकल स्टॉक फंडा स्क्रीनर यूज करते हैं, अंकल स्टॉक करते हैं. करेक्ट. हाँ पे अगर हम करते, चलो लेट्स से हम, अब आपने कहा तो हम लेट्स डू इट. वी से जी फैक्टर मोर देन 9, हमें सबसे हाई वाला चाहिए. एंड पेट्रियोस्की स्कोर मोर देन 8, क्योंकि इसका 9 का हाईएस्ट होएगा 10 और 8 के ज्यादा होएगा. सो लेट्स सी हाउ मेनी कंपनीज वी गेट. वी डोंट गेट एनी कंपनीज, सो वी डिक्रीज दिस बाय 8. कोई नहीं आ रही, इसको हम 7 करते हैं. Your first share coming is Sham Metallics. It's a good share, sir. It's a very good share actually. It's a very good share. It's a very good share, yes.
Acha, what do you think about any stock which has an FII holdings? What do you say about that stock? If the FI holding is more than 1 to 1.5%, it's a decent share. So if I say it's 10%, Very good share, sir. if I say 20%, Yeah. But then extreme. promoter holding will be very less. if I Yeah. say 50%, Any criteria on management quality? sir, just FII holding more than 50%. सारे अच्छे shares हैं तो. सर, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का ऑल टाइम हाई पता है कितने हैं? आप इसको ऑल टाइम है, आपके यहाँ देखो HDFC, अपोलो देखो. अब आप इसको देखो, इधर प्रॉब्लम इज बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है इसके यहाँ पे. एंड यू सी इसमें सर ये डिसेंट शेयर है फोर्टिस वाला, बाकियों को तो बहुत पीट रहे हैं आजकल बहुत पीट रहे हैं. But Apollo is anyways leading the hospital pack for the last 3-4 years, right? So सर it's यहाँ like पे प्रोमोटर्स चेंज नहीं हो रहे ना. हाँ, correct. ये Yes, बढ़ yes. गया सर, ये बढ़ गया आपका. Yeah. ये आप देखो ना कितना बढ़ गया. आपको मैंने 50% कहा है ना. गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास तो सिर्फ 5% है. Yeah. तो इसलिए इसमें ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो खेलने के लिए सिर्फ 5% है. तो वी आर जस्ट वेरी स्मॉल काइंड ऑफ. Retailers can't manipulate this stock basically. The only smart money can manipulate. ओके, नाउ यू सी इज श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. सामने सब कुछ है सर. आपको जो जो क्राइटेरिया चाहिए ना वो सब कुछ आपको देगा. अब आप इसको देखो, प्रोज है ही नहीं इसके, नेगेटिव ही नेगेटिव है सर. इसको ये पिटा भी इसलिए था. अब आप इसको देखो, आपके प्रोमोटर्स होल्डिंग नीचे देखो जाके. Yeah. Why promoters are keeping that to FIIs keeping such a high percentage? मैं इसलिए बड़ा इसमें हूं कि इसमें एक क्राइटेरिया जो मेरा बड़ा फेवरेट है ना, इज नॉट लाइक दिस. FII होल्डिंग ऑफ 20% एंड प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 50%. अब देखो कोई क्या मिलता है आपको. बाप रे बाप, कितने स्टॉक आ गए. इसका मतलब इन स्टॉक्स में बाहर के बंदों की हमारी तो कोई होल्डिंग ही नहीं है. सो लेट्स पिक अप एनीथिंग एज लेट्स पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स. ट्राई टू सी व्हाट इट इज देयर प्रोमोटर्स एंड इसमें ये देखें 21% एंड 58%. 80% तो इनके पास ही है, और पब्लिक के पास कितने? 9%. देखो, जब इंस्टीट्यूशन हम लोग, वी आर नॉट स्मार्ट मनी बट वी हैव टू स्मार्ट टू प्ले लाइक एन स्मार्ट मनी पीपल. अब मैं इसमें एक क्राइटेरिया और डाल देता हूँ. लेट्स से Can we check if the FII investment is growing? Is there any okay चलो. instead of Change in FII holding more than 10%. You had 4 of the stocks coming, sir. And this is nice. सर सब कुछ सामने है. मैं उनमें से नहीं, मैंने किसी ग्रुप में डाला था मैसेज, तो मुझे उन्होंने ग्रुप से उठा के बाहर निकाल दिया. मैंने कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. See, anybody who's taking money to teach all these things, I am there to defeat them. फंडामेंटल सीखने के लिए नहीं हमको चाहिए, हमें जो चीजें फ्री है. अब मैं इसको और बढ़ा देता हूँ आपको. We have only this company coming. इसको तो चार्ट में दिख जाएगा सर कि इसका बढ़ रहा है. ये तो 100%. सर यही है. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट ए स्टॉक्स फॉर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर यू. मेरा तो क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है. मैंने एक पीछे शेयर है गोइंग का डायमंड्स करके है शेयर. उसकी एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको भी ट्रेडिंग व्यू में. जस्ट टेल मी इफ यू आर एबल टू सी माय ट्रेडिंग व्यू. ये बड़ा मजेदार चीज हुआ, कल मैंने देखा था. उसको NSE में अपर सर्किट लगा था और BSE में लोअर सर्किट लगा था. कभी सुना ही ऐसा? मैं इसको पहले सर फॉर मूवमेंट हो जाता है कई बार ना, फॉर द मूवमेंट. सर मूवमेंट नहीं, पूरे दिन भर लगा रहा है. अच्छा पूरे दिन पर फिर तो सर कुछ ना कुछ है जा साला
एक से रुक जाओ. Very risky, very risky. Sir, No, no, recently there is a one penny stock. I bought the shares. Now you see Goenka Diamond and Jewels Limited, NSE and BSE. Upper circuit here, 3.45. ਸਰ ਇੱਕ ਗੋਇੰਕਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 19 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ Oh, that is Goenka Financials. ਹਾਂ ਗੋਇੰਕਾ Cobra stock, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ Very strong share. The very 6.5 strong ਰੁਪਏ share. ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ वो तो सर लेके बैठे रहो सर, उसको तो लेके बैठे रहो. वो is another is now is set to be next Bajaj Finance. It is set to be next Bajaj Finance. ਓਕੇ you ਉਹਦੇ see this- ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ. Now you see this is an upper circuit. Now I type again Goenka BSE. Add a lower circuit. Now what was here in this stock was I was not able to get this stock in any form. मैं बड़े दिनों से ट्राई कर रहा था, ये खुलता भी था, मैं कोशिश करता, मिलते नहीं थे. मैंने कल बीएससी से शेयर खरीद लिया जब लोअर सर्किट में था, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग ने तो सारे ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है. तो यहां से शेयर उठाया, 3 दिन डिलीवरी में उठा के बैठा रहूंगा आराम से. अब इसको नीचे से यहाँ सर अगर आप हमेशा बीएससी से लोगे ना तो आपको हमेशा 5 या 7 पैसे में सस्ता मिलेगा ऑलवेज सर कोई भी स्टॉक. मैं कभी मैंने ये ऐसे तो वो सर मैं आर्बिट्राज तो कर ही रहा, पर मैंने इसको ना इसके बारे में पढ़ा था कि इट्स चेंजिंग इसके डायनामिक्स हैं स्टॉक के. क्या है टोटल, मैंने तो 1000 रुपए डाल दिए बस, पीछे जितने के आए मैंने उतने एग्जैक्टली शेयर लेके छोड़ दिए. या डूब गए या ये मल्टी वो बनाएंगे. सर डूबते डूबते कुछ नहीं है, ये सब ऊपर अपने आप चले जाएंगे. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तो हमारे एक ट्रेड का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, बहुत छोटा सा. तो एक हम बैंक निफ्टी के उसमें निकाल लेते. सो ट्राई टू डिवाइस थिंग्स. नाउ बिफोर एनीबॉडी आस्क्स समथिंग, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द जेंटलमैन जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चेंज इन प्रोमोटर्स होल्डिंग बताया था कि रिफेक्स वालों ने, रिफेक्स इंडस्ट्रीज के प्रोमोटर ने स्टॉक खरीदा है. रिफेक्स के स्टॉक में कल रिफेक्स इंडस्ट्रीज का अपना इसमें स्टॉक है, कल ये गैप डाउन करके अभी डेली 1 आवरली टाइम फ्रेम को अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर इसको ट्रेड कर रहे हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इट इज ऑलमोस्ट एट ए वेरी गुड लेवल्स टू enter. I must compliment that gentleman. I'm very thankful, sir. At least आपने मेरी बात की इतनी इज्जत जरूर रख ली कि you're helping your fellow traders. I'm saying in the open forum. I don't know your name, sir. Please let me know, sir. सर शुमेंदु, मैं उसमें पवन जी के बैच में हूँ. Ah, Shumandu, thank you. Nice, nice. This is how we should help each other. This is an attitude. वो कहते हैं ना, एक से भला, वो कहते हैं 1 + 1 is not 2, it's 11. So if you have 20 people who are trading and helping each other, most of us will start growing in breeds. Now I will take your question, sir, please. Sir, management. Oh, I don't have Twitter. There is somebody who said, sir, I don't have Twitter. I am only here. I am part of the group. I'm just posting the links today. I'm very sorry I didn't post the links. I'm just trying. I will try to post. Just trying to. I will post the links. We have a we are not big people. We are very small people, and I have no. I am putting up my links. You can join any of these things. Today, for everybody's benefit, I have put a lot of charts in swing trade group. I will add this reflex chart also into this. It's totally posted in Telegram group, and be very careful. We are trading close to the budget. Please keep very, very tight stop losses, because most of the stocks are trading at their weekly support levels, daily or weekly support levels. So if weekly is broken, then we are going to touch the monthly low. Remember this part is. And we have a couple of stocks which are in a very bad shape. For my side, I will be taking position on Monday in Ultratech. I have already picked up TCS, and I'm looking very aggressively on Bajaj Finance.
These are the three stocks I'm going to most likely take positions on Monday. Oh, Sir, sorry, on Dixon का भी Dixon का भी मेरे को लग रहा है अच्छा भाई है. Dixon Technologies. अरे दीपक जी ने अच्छा. Dixon, see, I don't, if it doesn't come into this, I just show you one stock which I have just posted is for Forge. Mr. Deepak, stop drawing, please. This is the stock. Just see. This is the level it took support multiple times and it has gone down. But there is one issue which I find is if I shift it to this level, it had taken support here, it took support, went up, now it is below it. So unless it doesn't go over 4856, I'm not going to get enter into any of these stocks. Naukri has given me such a good fund to me that I'm badly stuck in Naukri now. So this is the only stock which is giving me the maximum pain right now. The same is with Mindtree also, sir. Sir, Mindtree, आप इसमें सब देख लो जो सारे stocks हैं इनमें सब में वो है आपका Muthoot Finance है. Muthoot Finance is at perfect support levels. मैंने अभी डाले चार्ट सबके उस ग्रुप में. Muthoot Finance ने तो सबसे अच्छा दिखाया पैटर्न. You had a reversal and then you have a spinning top again, which has closed above this candle. This was the day when we had a massacre. So this is the next day. So this stock I am quite bullish should go up. And I am not very bullish on, I made a lot of good money in Reliance because I had picked up it here only, 23, and I exited at the levels I wanted to do. And IRCTC is a good stock to buy. I'm just showing you just for a purpose that if anybody wants to take it, I am holding good of IRCTC and IEX. Both are there at daily support levels. I posted in the swing trade group. Those who are interested can go and see. There are a lot of charts I posted today. I was free a little bit, so I'm doing it. Anybody wants to ask any question because we are almost done with it now. Sir, you just spoke about Apollo Hospitals, saying that the FIIs are having a lot of quantity. So what do you exactly think, whether this stock is a good stock or not? Sir, Apollo Hospitals, coming from the medical fraternity, Yes, I'm sir. telling you, in the private setup, if any hospital which has taken itself to a level of what AIIMS and PGI are, though they cannot match the research which are done in there, but the quality of the care which Apollo Hospitals have been giving through its various branches is of par excellence. It is just like a five-star hotel, and they give real good care to the patients. That's why they are growing. And you see why pharma and these are not doing very well was everybody was anticipating a heavy rush into the hospitals in the third wave of the COVID. But actually, it turned out to be a dud wave. So these stocks did take some beating. Otherwise, the fundamentals of the stock is pretty good. And you should not be worried even if you have invested at higher levels. It will ultimately go up. It's a good Yes, stock. sir. I get that, sir. I wanted to ask you whether the FII is holding the one which you told the criteria, whether it is good or not for any of these stock, not only Sir, Apollo Hospitals. no, I gave you an no, example. I give you one example. You have 100 rupees. Yes, sir. You have 100 rupees. Will you put 50 rupees in a stock? If Okay, you're, even if you are doubtful. You will not put your hard-earned money because you will think 20 times before putting it. Same way, they have the privilege of having the best possible brains behind them, working for them. So they will put in money only in the stock where they are very confident that they are going to get a lot of money. So always remember that even the promoter holding. See, I have picked up HCL Tech. I'm not denying it. I have took HCL Tech. Even though it's 20 rupees down on what it is, but I'm dead sure the stock is going to do well. I just show you why I'm saying so. I knew it may fall down to a low level. What is it is showing you? This is on a daily chart. This is a level it broke, retested, and again went up. Came here, retested, again went up. What's happening here? Isn't it this candle like this only? Yes, sir. Will you like to
buy shares of anybody, even though your employees will end up buying share worth 100 CRs from open market. And from they bought somewhere on this day. The price has come down till here. They are not worried because they are looking at this price approximately in next 6 months. It is 20% return. So any more questions, please? Sir, you mentioned that particular company is becoming next to Bajaj Finance. What is the company name, sir? Please, if you don't mind, can you repeat? Sir, it is not like it can be what I. Goenka Finance. Sir ne Goenka Finance bola. Goenka Finance is Goenka Finance. I had also tried to pick it up very early. I have my personal positions in innovation finance. I have taken position, but I don't put so much of money into it. I only put in money which I can spare from my normal trading and investment. See, if I make a profit of, let's say, 10,000 rupees in particular stock, so I will invest that profit into this money. I will take out my principal. I'm not going to invest my principal amount into it. So what I did was I earned somewhere, I think so, in one of the options of Bank Nifty, I earned 4,000 rupees. So I bought innovation finance of that amount. So that is एक RTN power भी ले लियो सर. पैसे दे दो. सर ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ट्रांसफर कर देना. शेयर ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ. बोलो किन्ने ले दा. See, remember is once people fear when the market falls. सर आप पूरे साल में 3 बार वेट करते हो कपड़ों पे सेल कब लगेगी और आप तब खरीदते हो. आजकल तो सेल लगी हुई है पूरी. आप बोलो कौन सा स्टॉक नहीं है अच्छा लगे. पूरा सेल लगा हुआ है टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर गुड्स में पूरा सेल लगा हुआ है. मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट. अरे उससे ज्यादा तो भाई फार्मा में लगा हुआ है. फार्मा तो ऐसा लग रहा है कि मत लगाना. फार्मा को हाथ मत लगाना. नहीं, फार्मा लगा सकते. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. अभी फार्मा देखो, ये स्टॉक आपको फ्यूचर के लिए तैयार रखना. Alkali Metals is the stock or Century Aneka. With the seat belt coming mandatory into play, Century Aneka retested its breakout level that day. अगर आप इसको छोटे टाइम पे करो तो आपको क्लासिकली रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है स्टॉक. ये क्या करता है सर? व्हाट डू दे डू? सीट बेल्ट दे मेक. वो एजाइड उजूड बनाता है ये सेंचुरी एनेका. So they are going to get a lot of benefit. एक मुझे ये डॉक्टर श्री हरि ने शेयर खरीदवाया था कॉफी डे. मैं तो यहाँ पे से बैठा हूँ. ये देखो लाइनें भी ड्रॉ की हुई मैंने. भाई यहाँ पे बैठा था कितना सर 25 रुपए थे होने लिया सीगा. बड़े वधिया लगा. 42 पे में से लेके बैठा हूँ और अब देखो कहाँ तक बैठ गया हुआ. सर लेकिन ज्यादा शेयर नहीं है ना, बहुत थोड़े हैं. हाँ तो थोड़े सर. पैसे तो पैसे ही है. पैसे ग्रो करने चाहिए. The ultimate aim should be our money should grow. We are not come here to lose our money. हम losing mentality से बाहर होके जाए. हमने पैसे नहीं lose करने. मेरा ये पिछले 1.5 साल से मकसद रहा है और मैं 1.5 साल करता हूँ. एक क्वेश्चन पूछूं किसी से? Anybody who HFCL मेरे पास भी है सर. And एक क्वेश्चन पूछूं? Sir, sorry. सर. Can you rename the stock? Century Enka, right? हाँ, Century Enka. What is SMA or EMA means for? मैं हेड दे देता हूँ. इनका क्या मतलब होता है? मैंने आज फेसबुक पे भी डाला ये उठा के. SMA सिंपल मूविंग एवरेज है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ गया? आई एम ए ट्रेडर. SMA में क्या होता है कि जब 3 कैंडल फॉर्म होंगी तो वो तीनों का एवरेज निकलेगा SMA. और EMA क्या करता है कि जो लेटेस्ट कैंडल है उसको हाई वेटेज देता है प्रीवियस 2 से. तो इससे पता चलता है कि अभी का मतलब इससे कि CMA for traders, EMA for investors. EMA is aggressive. Fast moving है sir. EMA थोड़ा fast moving है, so it gives you more probability of candle का ये लो. EMA for traders और SMA for प्राइस अगर SMA और EMA के ऊपर है. Who is this gentleman who said it?
EMA is for traders and SMA for investors. You must This is Shamil, Bangalore. correct. Shamil, this is Yeah. what it is. Here is the mentality. Traders are for fast in, fast out. So we use this. EMA. EMA. और SMA is for हम investors के लिए यार बैठो SMA 20 या 200 को टच करेगा फिर देखिए. Correct. हमें क्या फर्क पड़ता है उससे वो लेटेस्ट डाटा दे. हमने जब खरीद लिया, अब लेट्स से आई बॉट कैफे कॉफी डे एट 42 रुपीज, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 62 रुपीज पे था. अब मैंने करके छोड़ दिया. अब वो हिट हो गया तो हो गया, नहीं तो मुझे तो पैसे ही देके जा रहा है ना 15 दिन में. 50% तो मेरा पैसा बन ही रहा है ना. चलने तो जहां जाता देखेंगे, फिर जहां जाता है तब देखेंगे हम इसको. सो यू मस्ट थिंक ऑन दीज लाइंस ऑलवेज. अगर if you are picking anything which moves very fast, so then it is going to be something you have a trading mentality. If you are picking something which is slow responding, then you have a investor mentality. So अपना दिमाग को पहले फोकस करो. ये नहीं है 50 रुपए पे शेयर खरीदा तो 150 पे जब हुआ तो बेच देना है. जब आप इन्वेस्टर हो उस स्टॉक में तो आप इन्वेस्टर हो, तो you have to give some time. आपका पौधा रातों रात अगर आप you put up a seed in the ground, it doesn't become a tree. It takes 10 years to become. So ऐसे ही इसको सोच के चलो. और कुछ सर कि आज बंद करें अब सेशन रिपब्लिक डे? सर एक पूछना था. हाँ. आपने जो ग्रुप बोला है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे आप? सर मैंने अभी ये लिंक तो डाले सारे. Select all. Devyani. Devyani, I'm very bullish. I'm very bullish on Devyani. See, Devyani is I always compare Devyani with which is the contemporary for Devyani? Anybody? सर थोड़े यहाँ जेडे फूड्स वाली चीज ने बर्गर किंग है सर. ना बर्गर Foodworks. सर जुबलिएंट फूड. सफायर. ये देखो कहाँ पे आया हुआ है आपके. ये आपका कौन सा लेवल है? डेली के सपोर्ट पे खड़ा है. मेरे लिए ये स्टॉक क्यों मेरे लिए थोड़ा सा है कि इसका ये लेवल था जहां पे मैं एंटर किया था, और जब इसको यहाँ पे ये मल्टीपल रिजेक्शंस पड़ रही थी ना, ये मल्टीपल रिजेक्शन में निकल गया था. मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट मारा. मैं इसको अब नीचे पकड़ूं. मैंने एक रन तो 50 रुपए का ले लिया. अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ के अब इसको बड़े मूव के लिए मैं खेलने की सोच रहा हूँ. मैं इसकी अब कल की पोस्ट बजट ओपनिंग देखना चाहता हूँ कि इसकी ट्रेडिंग कहाँ होती है. कल जैसे एनीबडी कुछ अब लोग फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कल तो मार्केट विल ब्लीड टू दिस लोअर लेवल. तो यहाँ पे ये मेरे पास सेल के लेवल पे आ जाएगा. मैं 50 रुपए तो निकाल चुका हूँ, तो अगर इवन इफ आई एंटर, सो आई विल बी कमिंग टू एट मेरे नेट प्राइस विल बी 90, जो स्टॉक ने आज तक कभी नहीं छुआ. तो मैं तो यहाँ पे आके बैठ गया ना. फिर तो इसके ऊपर तो मेरा सारा ही प्रॉफिट है. सो आई डू इट. इसका जो पैरेलल है दैट इज सफायर फूड्स. सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड बिरयानी वाला है. हाँ, ये इसका लेवल है. मैं तो डेली लेवल से नीचे आजकल अब देखता ही नहीं स्टॉक. जब मैंने लॉन्ग टर्म या स्विंग में लेने आराम से इतने स्टॉक मिल रहे हैं, इसको आने दो और थोड़ा सा नीचे. जब नीचे आएगा करना है, क्योंकि बजट पे इन पे टैक्स लगने की है. सेम इज फॉर जोमेटो आल्सो. स्टॉप लॉस कितना रखे देवियानी में? सर इंडिया मार्ट जो गिरा है टॉप बनाने के बाद, वो आज तक भी नहीं बढ़ा है सर. हेलो सर, ये मैं देवयानी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. एक सेकंड. ओ सॉरी, अब आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है सर. अब आ रही है. वो मैंने गलती से. नाउ यू सी हियर. हाँ सर. हाँ सर. This is coming to on the weekly support levels for you. Okay, so at this level it will become very good. ये सारे stocks FIIs के बड़े favorite हैं. ये नौकरी. अब देखो नौकरी को कैसे इन्होंने पकड़ के पीटा है. जी सर.
और मेरे जैसा बंदा जो टेक्निकल में इतना स्ट्रांग था इसमें, ये इसका रीटेस्ट के लिए स्टॉक आया था ऊपर। मैं यहाँ पे घुस गया जब उसने ये वाली कैंडल बनाई, मैंने कहा ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। देखो कैसे पकड़ के उन्होंने पीटा मुझे, बुरी तरह पीटा मुझे। ये तो मैं बुरी तरह फंसा हूँ इसमें, और ये मेरे पास छोटी नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी है मेरे पास। तो फंस गए, कोई नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कन्वर्ट कर दूँ, बैठा रहूंगा इसमें। जब मैंने अपने प्रॉफिट लिए बिना नहीं मैं स्टॉक से बाहर बैठा रहूंगा। फाइनेंस में कहाँ एंट्री होगी अभी? सर गोइंग का फाइनेंस देख लेते हैं, मेघल इसमें फाइनेंस एंड बिजनेस केसी का शेयर है वीकली में। अभी तो सर नीचे आने दो इसको, यहाँ पे देखेंगे 18.40 पे देखेंगे, यहाँ लाइन लगा के अलर्ट लगा देते हैं, यहाँ देखेंगे इसको कहीं पे। अभी तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। Sir, what was your rationale between in this stock, Goenka Finance? It had come in one of my screeners. I have not discussed those with you. I had kept an eye on the stock for a long. See, for any circuit breaking stock, when it starts going up, it has to come down once at least. So I will see it at what level it comes. देखो ना यहाँ से भी वो नीचे आया था. So I will wait for it to come down somewhere on about here. My first, I will start looking at it somewhere here. अगर यहाँ पे वो एक अच्छी फॉर्मेशन मुझे कोई बनाएगा तो मैं देखूंगा इसको मैंने क्या करना है. अभी तो ये नीचे तो वैसे इसके अंदर सर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता नहीं है. एक ये है और एक कर्मा एनर्जी करके शेयर है. सर शेयर वो क्या कोई मून पे जैसे करके है, हमारे यूरोलॉजिस्ट सर का भी है उसमें होल्डिंग, वो सर्किट ही लगी जा रहा है. 32-33 रुपए का हो गया. अरे सर मतलब कर्मा एनर्जी और ये तो सर इतने लोअर वॉल्यूम से ऊपर गए हैं ना, वो सिर्फ 600 रुपए का भी फ्रीज लगाता रहा है, 600 क्वांटिटी का. अभी तो स्टॉक्स तो सारे उसमें है, सेल में मिल रहे हैं आपको. अभी तो सारे स्टॉक सेल में है आपके पास, आप जो मर्जी उठाओ. गोएंका में कितने में एंट्री ली थी सर आपने? मैंने तो ले ही नहीं पाया ना, मुझे तो सर्किट पे मिला था शेयर. सर ने ली है, डॉक्टर सिंगला साहब ने ली है. मैंने ली हुई है एंट्री 6 रुपए पे ली है. लेकिन बहुत ज्यादा सर मिलते नहीं है एक्चुअली. आप ना एक्चुअल 20 रुपीज वाला मेरा वो उसमें अगर आप लो ना तो 2-2 करके शेयर आते हैं. ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी. अगर स्टेबल मार्केट में खेलना है ना तो वो ये मार्केट है गोल्ड की, फॉरेक्स में. आप चार्ट में देखो कितना रेगुलर पैटर्न आपको मिल रहा है. आप अगर ये रेंज भी ड्रॉ कर लो, लेट्स से दिस इज ऑन 4 आवर्ली टाइम फ्रेम, आप देख लो आपके लेवल्स को, आप इसको भी कर लोगे तो आपके 1 या 2-3 बार तो आपको प्रॉफिट उसी लेवल पे दे रहा है. हमारे इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज इट इज गेट्स अफेक्टेड वेरी इजीली. मैं आजकल इनको देख इसका सर सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, आप जब गोल्ड जो है जब आपको 44,000 के आसपास मिले ना तो तब 1-1.5 किलो लेके रख दो. आपको विद इन 3 मंथ्स वो जो है वो करीब 3.5 से 4 लाख रुपए दे जाता है. सर गोल्ड का फिजिकल पोजीशन लेना भी ना आपको पता है ऑन लीगल टर्म्स इज समथिंग एन इशू. वी मस्ट नो द लॉ. Keep the gold into physical form. We decrease the foreign reserves for our country. The gold वो उसके अकॉर्डिंग आपके बनते हैं ना, उसका कुछ समझ गया सर. वो फंड. मैं नॉर्मली किसी को रिकमेंड नहीं करता गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लेने के लिए. हम सबके पास इफ यू कैन गो एंड सी द डाटा व्हिच सेज more than 50% of the gold is with the general public, not with the Indian public. इतना गोल्ड है हम लोग के पास. अरे जॉनसन फार्मा का क्या सीन है? बहुत दिनों से अपर सर्किट सर फार्मा के सारे स्टॉक भूल जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ. आप क्या कर रहे हो मैं आपको ये दिखाता हूँ. सर ये एक्चुअली फार्मा स्टॉक भी नहीं है, नाम से जॉनसन फार्मा चल रहा है लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है. ये देखो सर मैं आपको ये स्टॉक दिखाता हूँ. चिंतन जी को याद होएगा ये 620 पे निकल गए थे जब ये वाली स्पाइक आई थी. ये एग्जिट कर गए थे. मैं बैठा रहा, मैंने सोचा ये तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा. कहाँ पे ले आया, आधी कर दी इन्वेस्टमेंट. वो तो सर अभी सेक्टर रोटेशन चल रहा है, मतलब जैसे ये तो मैं तभी सबको कह रहा हूँ अभी फार्मा में कोई पैटर्न नहीं है. डोंट स्टे अवे फ्रॉम फार्मा. आप लॉरस आप देखो, ये तो मैंने अभी ग्रुप में फोटो डाल दिया.
परफेक्ट सपोर्ट पे वीकली पे। अरे आप जॉनसन फार्मा का देखोगे ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना फाइनेंशियल डाटा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। मैं बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ कोविड खत्म होगा तो फार्मा का ये चला जाएगा सर। ये मैं लेके बैठा हूँ 150% रिटर्न दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या कैसे एनालाइज करूँ। फंडामेंटल कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये फार्मा सर मेनली कंपनी के तो वेबसाइट पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। नहीं मिल रहा है। अलग ही तो फिर सर प्रॉफिट बुक करो, मारे कर रही है। जो है प्रॉफिट बुक करो और फिर उसको देखो फिर क्या करना है। Sir, I think textile stocks are best right now. Textile stocks. सर हर एक चीज का सेक्टोरल होता है। मैं आपको भी बोल देता हूँ, आज आप मेरी वर्डिंग्स ले लो। मेटल्स इस टाइम डिस्काउंट पे है। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता सर जो अभी ये जो इन्होंने बोला ना सर, वो चाइना प्लस वन स्टोरी है। अगर आप क्लोथिंग में किसी में भी जाओगे ना सर, मतलब टेक माय वर्ड्स, यू विल गेट एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न्स। सर आई एग्री टू ऑल योर पार्ट्स। मैं अब आपको कह रहा हूँ, किसी ने अगर लॉन्ग टर्म करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज में करना है एंड मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक में, व्हाई नॉट दिस स्टॉक? मैं तो बोलूंगा रखा ना पूरा रिसर्च ये तो भरिया पे है। टेक्सटाइल में कौन सा स्टॉक है सर? टेक्सटाइल में आप अरविंद ले लो, अरविंद फैशन ले लो। व्हाट अबाउट ट्राइडेंट? मैंने सर कभी फॉलो नहीं किया। एक्चुअली ट्राइडेंट सर, ट्राइडेंट बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका है। मतलब मैं 17 रुपए से बैठा हूँ, सर वगैरह तो 6.5 रुपए से बैठे होंगे, लेकिन 17 रुपए से मैं कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ एंड विद अ गुड क्वांटिटी। बट ये जो है अभी सर डर लगने लग गया है जो छोटे स्टॉक है ना, क्योंकि अरविंद वगैरह की तो स्टोरी बहुत अच्छी है। ये आदित्य बिरला फैशन, दैट इज गुड। अरविंद फैशन देख लो सर, अपने हाई से अभी 1/3 पे पड़ा हुआ और उसके लिए जाने के लिए पूरा 1000 रुपए का रेट है। ये मैंने एक श्राद्धा नाम डाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत दिनों से मतलब हिट में दिख रहा है सेक्टर। ये श्रद्धा सर मैंने कल ही बेचा है 572 रुपए पे। ये तो अभी तो ऊपर जा रहा है। हाँ ये आप इसका बुक वैल्यू देखोगे ना, मतलब ऑलमोस्ट 1 के अराउंड है। इसका बुक वैल्यू कुछ मेरे ख्याल से 40 और 50 है और ये 60 के आसपास चल रहा है। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग रह सकता है, ऐसे लग रहा है। Kashi, I have sent my number to you on the chat. आप देख लेना। Another thing is for everybody is I must say you that we have good people like Chintan ji with us. We have a couple of people will be joining us very shortly on to teaching us the fundamentals. So whenever सर जी गिल्डा के गिल्डा फाइनेंस है, उसके बारे में बताइए ना। सर मैं इतना नहीं पढ़ता सर मैं नहीं पढ़ता। नहीं सर, वो भी एक्चुअली उसका गोइंग का फाइनेंस की तरह काफी कम में मिल रहा है करेंटली। आपने जो स्क्रीनर्स डाले थे ना उसमें था। नाम क्या है सर? GELEDA था कुछ, मैंने देखा था उसमें। सर कुछ नाम आ नहीं रहा। टाइप कर दीजिए ना, टाइप कर दीजिए फाइनेंस, चैट में टाइप कर दीजिए। नहीं सर गिल्डा तो आ जाना है, फाइनेंस कर लेते हैं। हाँ फाइनेंस था सर। आ रही है कहीं पे भी। GLANDA, GLE, A for apple, A for apple, NDA। नहीं नाम नहीं आ रहा। ग्लैंड फार्मा का तो GEL था सर, GEL था कुछ, GEL। ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड तो नहीं है सर? मैंने चैट में भेजा तो बड़ा है सर। ग्लैंस तो पेनी नहीं है सर वो। कमल सर मैंने GEL डालिए ना सर, GELEDA शायद आपके स्क्रीनर में आया था सर, जब आप आई थिंक बिलो 20 में आया था। लगाकर देख लो सर, स्क्रीनर लगा के। स्क्रीनर आप बस करो यार, थक गया मैं। सर नीलेश जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ सर ना। GALADA होगा सर, गैलेडा। GALA आ गया नीचे, ग्लाडा फाइनेंस।
गैलेडा Gallada फाइनेंस Finance 16.7 का है, near its all time high चल रहा है, dividend yield 0 है, ROAS is just 4%, which is very low, return on equity is also negative है, and आपका अभी flow नहीं आ रहा. Let's see what our thing is. Petrosky score 4 है, very poor. G factor is 6, average, and promoter holding has increased for 3.57%. Negatives बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने कुछ है. And let's go and see the profit before after tax. Net profit negative, 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 negative. ज़्यादा negative है sir. बहुत कम positives है. It's a risky stock. Now let's go and see what is the holders like. Promoters are. That is where I personally feel so is not a bad सर stock. प्रमोटर ने 46% तो 60% करती. Yes. इसका मतलब there is something big in the stock. Is now you see here, raw share in 2007 was 12%. It has decreased. यहाँ negative से पहली बार positive हो रहा है. In last 3 months, अब next time हम करेंगे turnaround companies. कैसे how to find turnaround companies? Minus 3.62 से वापस 4.13 आ गई. So may do well, but we don't know how good it will be. I'm not very sure. क्योंकि Sir, इतने if you stocks want हैं, to आप ऐसे play ethanol story, na sir, then Andhra Sugar and this Dampur Sugar. Check the fundamental also, sir. Andhra Sugar and Dampur Sugar. सर इसके साथ में ना अगर ये वाली स्टोरी चलती है तो सबसे बढ़िया कैपेक्स जो है वो रेणुका की है और उसके पास प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है. फंडामेंटल रेणुका ठीक है, लेकिन इनका जो फंडामेंटल है ना आंध्रा शुगर का, आंध्रा शुगर में केमिकल प्ले भी है और शुगर प्ले है और इथेनॉल भी है. Let's see any promoter holding more than 70%. इसको चला के देखें. साइलेंट होते हैं ना, वही सबसे वायलेंट होते हैं. अब देखो इनको हमने क्या डाला, promoter holding nearly 70%. कितने stocks आ गए? 1064. So let's make it even more stringent. 85. 37. होगा ही नहीं. 85 तो सेबी ने रूल मना किया है ना. अब देखें शाह मेटालिक्स में कितना है. 88%. ये तो डिक्रीज करना पड़ेगा इनको फिर. पब्लिक के पास कितना है? 7%. सर ऐसे थोड़ी स्क्रीन में आ गया उठ के. मैं तो इसको कहता हूँ लेट्स गो एंड डू इट 90%. लेट्स सी कितने आते हैं. रुचि सोया अभी भी है. रुचि सोया 98%. रुचि सोया ने तो लोगों को अरबपति बना दिया. मुझे याद है किसी एक बंदे ने 5 लाख शेयर खरीदे हुए थे 1 रुपए पे. अब सोचो उसका कितना पैसा होगा उसके पास. 26 रुपए थे मेरे को 3500 शेयर सीगा, लेकिन बेच गया जदों डिगदा रहा. सर वो तो ये देखो ना, अब आप देखो आपके पास स्कूटर्स इंडिया जैसा शेयर है जिसमें 90% से ज्यादा प्रोमोटर्स है. HMT है. अब इन शेयर्स को कैसे कोई डूबेगा? नहीं सर उदों तो एक्चुअली ये प्रमोटर होल्डिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਹੋਈ ਹੈ ਰੁਚि सोया ਦੀ ਤਾਂ. चलो guys, anything more or we can close the session. अब तो खाना खाने का टाइम भी है. Sir, I have a good share for everyone if they can get it. Yes sir, please. It's a खूबसूरत sir. खूबसूरत वो जो penny stock है. Yes sir. It's currently on a higher upper circuit, sir, but trading with a very low volume. If anyone can get, then it's a good share. ये BSE में ही चलता है ना सर स्टॉक. Yes sir. ये सिर्फ BSE का स्टॉक है सर. खूबसूरत है ना, ये रहा खूबसूरत इंडिया लिमिटेड. ये मुझे कल ने कहा है, किसी ने कहा है, ये नीचे से बहुत तगड़ा जा रहा है ऊपर. इसको सर्किट ही लगी जा रहा है. Yes sir. You have to wait for these to come. It's trading with a very low volume, sir. We are not able to get. And sir, one more thing, sir. You were telling about one share, like it is on upper circuit on NSE and lower circuit on BSE. Same thing I have seen. I have a query regarding Vivida. It is also showing same thing, like it is on upper circuit on NSE, whereas lower circuit on BSE. 2 रुपए 2.5 रुपए का शेयर है ये सर. एक्चुअल में आया था स्क्रीनर पे, लेकिन VIVIDHA विविधा VIVI
DH नाम भी नहीं। डी DH विविधा, ये आ गया सर। सर विविधा आ गया नीचे। 4th पे। ये वाला ना? यस सर। भाई सागर पॉलिटिक्स लिमिटेड, हाँ ये तो नीचे का सर्किट लग गया इसको। यस सर सर। और NSE में लेकिन नीचे का सर्किट लगा हुआ है। रिसेंटली सर इसमें जैसे NSE में अपर रहता था, BSE में लोअर रहता था, ऐसे टाइप चलते हैं सर। इसका रीजन क्या होता है सर मेनली? सर ये क्या होता है सर, वो क्या होता है ना, गलती से बॉम्बे वाले ज्यादा ले गए, नेशनल वाले को बाद में याद आया कि ले बॉम्बे वाले तो नीचे है प्राइस। वो आर्बिट्राज फ्रंट वाले तो बंदे क्या करेंगे, यहाँ से खरीदेंगे वहां पे अगले दिन बेच देंगे। सर तो वो बराबर लेके आ रहे हैं प्राइस को भी, अभी पता नहीं किस साइड जाता है। तो whenever you put in such stocks, always keep very less amount of money. मैं तो कोई प्रॉफिट बनाता हूँ मैं वही डाल देता हूँ, मैंने कहा उड़ गया तो उड़ गया, फिर सोचेंगे हमारी कैपिटल बची नहीं। सर ये जो कामधेनु स्टील की आई है ना, ये बहुत ज्यादा जो है, इसके प्रदीप जी जो ओनर है ना, प्रदीप जैन, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से रिटर्न्स देते नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को। पता नहीं सर, मैं इतना नहीं अब देखता, मैं इतने नहीं, मैं तो ये करता हूँ कि अगर देखने लगे तो 7,000 स्टॉक्स है, पढ़ के पागल हो जाओ। हाँ, एक वो डॉक्टर श्री हरि ने बड़ा अच्छा आज डाला है, वो उसको जरूर रखना लॉन्ग टर्म की, उनकी ना रिसर्च थोड़ी अच्छी है डॉक्टर श्री हरि की। हाँ, डॉक्टर श्री हरि के स्टॉक्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा उनके वाले स्टॉक सिमिलर है। वो काफी है, मैंने काफी इन्वेस्ट किया हुआ उनके कहने पे भी। सर RTN पावर के रिजल्ट भी उन्होंने डाले थे। देखिए ना, टिल्टन टेक। सर पारस डिफेंस के बारे में दसो जरा। सर देखो, देयर इज एक कल कर लेंगे, परसों करेंगे वेबिनार। डॉक्टर ने अभी एक मिनूलेक्स करके शेयर बताया सर, मिनूलेक्स बजट स्टॉक्स। नाउ टेल मी व्हाट आर बजट स्टॉक्स, जिनको बजट में कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। फर्स्ट इज रेलवेज, व्हाट आर द स्टॉक्स? RVNL, राइट्स, IRCTC, IRFC। सर मुझे एक सन करने दो, और एक वो टाटागढ़, वो क्या है, टाटा वाला पता नहीं क्या है, टाटा वैगन, टीटागढ़ वैगन्स, वो आगे। नेक्स्ट इज हाउसिंग, हुडको, जो पेनी उठाओ ना, हुडको और इसके साथ वाले जो भी हैं छोटे मोटे वो सारे उठाओ। देन एग्रीकल्चर, सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सर फर्टिलाइजर, शक्ति, देन योर फर्टिलाइजर्स कमिंग इन। इसको पढ़ो। एक डिफेंस बजट में ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स 15% का इंक्रीमेंट आ रहा है ऑन एन एनुअल बेसिस। सो डिफेंस में विद मेक इन इंडिया कंसेप्ट गोइंग इन, वी हैव पारस कमिंग इन। पारस डिफेंस को मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। डिफेंस में क्या है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है सॉरी, पर मार्जिन बहुत कैश आने में बहुत टाइम लग जाता है। अब GST जिन पे लग सकती है वो मेरे हिसाब से जोमेटो होएगा, देवयानी होएगा, जुबलेंट होएगा, इन सब पे लगेगा। एक ITC पे लगेगा अलग से, और इन्होंने कुछ ना कुछ उन पर टैक्स लगा देना, कुछ ना कुछ इन्होंने लगा देना ऊपर। आप लेके चलो, गवर्नमेंट ने सब टैक्स की स्लैब बढ़ा दी। तो मुझे ये वाले जो स्टॉक्स है ना, मैं इनसे थोड़ा सा CMS इन्फो एज दा की सीन है जी सर। वो क्या है सर, केड़ा स्टॉक है सर? CMS इन्फो एज हुणे लिस्ट होया से पीछे। सर कोई आइडिया नहीं सर, मैं आई डोंट दिस थिंग इज, I don't deal all these things sir. So ये डॉक्टर श्री हरि को कैसे हम मतलब फॉलो कर सकते हैं? Sir, he is there in the part of the long term investment group, जो WhatsApp का ग्रुप है उसमें है वो। मैं नहीं हूँ सर, पोस्टिंग्स डालते रहते हैं अच्छी। सर आप नहीं है, एक सेकंड वेट हाँ प्लीज सर, just send me a WhatsApp message on this number। श्योर सर। सिर्फ 10 सीटें हैं उसमें, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होएगा, जिसके पहले 10 आ जाएंगे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। So इसमें है वो, so just send me a message on this, I will send you the link further। बस करें सर, बहुत हो गया। सर नीलेश, हाँ जी, मुझे कर देना सर।